Okay, guys, welcome back to my The Hindu newspaper analysis. To my channel Demystify. Let's start with our analysis. Okay, होम बरियल साइट्स टू वाई फॉर यूनेस्को टैग. देखिए यूनेस्को जो है वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट ढूंढता है हर कंट्री में हर साल. एंड दिस ईयर व्हाट द सेंटर इज सबमिटिंग टू देम इज द बरियल साइट्स in the Assam's Chiraitu Maidans. So it's a very great thing, and you should, search it on the web and actually, see for it that what are these Chiraitu Maidans and why are they famous and what is their speciality. So it's a very good thing because if it is included in a World Heritage Site as a World Heritage Site, then it must have something special. Anyways, let's move ahead. Jammu twin explosions leave 9 civilians injured, trigger security scare. Again, the explosions and the security threat continues in Jammu and nearby areas in Kashmir, and it's a struggle every day to survive there. Saxena defaming city's education model. Tipra Motha BJP to hold talks to forge alliance. Tipra Motha and BJP. Let's move ahead. So here it's the same thing. These politicians, sometimes I just feel that they don't have anything left. They are just blaming each other like fools. मतलब उन्हें बस दूसरे वाले को कुछ ना कुछ गलती बताना है. Sometimes I think it's not even making sense. Nothing. मतलब कुछ भी बस बोलना एक दूसरे के खिलाफ कि हाँ उनका नाम किसी उसके लिए आना चाहिए. तो I don't know what happens with them. Saxena, you must all know that Saxena, VK Vinay Kumar Saxena, is the Delhi's Lieutenant Governor, LG. Protest near BJP MP's house over notice to slum dwellers. IAF officer arrested for hoax. Bomb call to delay train. Fire breaks out at Connaught Place restaurant, uninjured. LG launches anti-plastic drive. I am brave, but the trauma haunts me. Unending road to justice. Okay, the Shahadara gang rape. The now 21-year-old victim talks to the terror she experiences, but also about confronting life and her alleged attackers. It's very difficult, guys. मतलब सिर्फ ये कह देना it's very difficult. One cannot even imagine what somebody in such situation goes through. It's beyond words, really. The Shahadara gang rape case, where the victim, who is now 21 years old, oh my god, okay. BJP demands TCW chief suspension for fair probe and molestation case. License to sell food in open areas, roofs online now. Okay. Patna roadside eatery, once a political nerve center, struggles for permanent safe. Wow. एक टाइम पर जो आज ये छोटी सी एक चाय खाने पीने की दुकान है, एक टाइम पे ये इतनी पॉलिटिक्स का अटेंशन सारा इस जगह पर आ गया था. तो इट्स लाइक दिस इज पॉलिटिक्स, नथिंग्स परमानेंट. Amit Shah to visit Bihar next month, Tripura election, Tipra Motha, BJP to hold talks today to forge alliance. Okay. Okay. Mamta's road show in Tripura on February 7th. So, look, see, just ना जैसे ही कोई भी स्टेट के
इलेक्शंस आने लगते हैं सारा फोकस उस पर आ जाता है एंड एवरी अदर पार्टी इज रैलिंग देयर शोज कर रहे हैं अचानक से त्रिपुरा इज बिकम्स लाइक द बेस्ट स्टेट एंड द सबसे अच्छा स्टेट और ये एंड वो एंड सारे अचानक से प्रॉब्लम्स उसकी सॉल्व करने के लिए एवरीबडी इज़ रेडी एंड एवरीबडी हैज सॉल्यूशंस फॉर इट टू इसको ऐसे करना है इसको ऐसे करना है एंड बस ये स्टेट तो बिल्कुल ऐसे करना है एनीवेज शंकर मोहन रिजाइंड एज डायरेक्टर ऑफ केरला फिल्म स्कूल K.R. Narayan Institute have been on a strike since December, demanding his resignation, accusing him of caste discrimination and forcing women staff into domestic labor. Foreign news. Farmers upset over meager amounts of insurance payment. Insurance के बहुत ही कम पैसे मिलने पर farmers are very upset and they are demonstrating at the Guramalani Tehsil. Man accused in Tirumala temple drone video case held. 4 photographers killed as lorry rams car in Telangana. Bar-headed cheese seized from actor's farm in Karnataka. In poll-bound Karnataka, JP Nadda calls Congress Yatra meaningless. Again, targeting each other. 22-year-old EFLU student kills self in Hyderabad. Writer returns royalty. Flays inclusion of her work in textbooks. Okay. Royalty is when somebody else's copies your work, your original work. That person has to take permission from the original writer. Like anybody who is copying, जो किसी और का काम ले रहा है, उसको जिसका भी काम वो ले रहा है उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी एंड उसका वर्क यूज़ करने के लिए कुछ ना कुछ रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी. सो दैट इज़ व्हाट इज़ रॉयल्टी, कॉपीराइट issues, all these. Case study published on binge watching habit among elderly. Okay, binge watching habit among elderly के जो बड़े लोग हैं वो देखते हैं, मतलब continuously they are watching. Binge watching तो हम सभी को पता ही है, everybody does that. And children's मतलब बच्चे children तो करते ही हैं, the younger generation, but the elderly also do that. Of course, it's the era of web series and stuff. A rice-loving wild jumbo drives villagers up the wall. This is about PT7. An elephant who is a very very wild elephant, and it really is very violent. A home burial sites to wife for. Okay, this is from page 1. China building new dam in Tibet near Indian border. That is, China is like trying to take control of everything. It's building sites every other place, in Sri Lanka, near India, Indian border, in Tibet, all these places. And it's like slowly taking. अभी एक रोड उन्होंने कंस्ट्रक्ट कर दी, अब एक डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो it's very clearly like they are taking control of everything. ISF workers clash with Trinamool police, 17 arrested. India's legal landscape changed a lot, says CGI. BBC documentary critical of Prime Minister blocked by I&B Ministry. Okay. सो इट्स टॉकिंग अबाउट एक नई डॉक्यूमेंट्री जो है वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बनी है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर, एंड ऑल दीज डिस्कशंस आर अबाउट दैट ओन डॉक्यूमेंट्री. उसी के बारे में है कि द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, दैट इज़ द I&B मिनिस्ट्री, उन्होंने इशूड ऑर्डर्स टू ब्लॉक मल्टीपल यूट्यूब वीडियोज़ ऑफ द फर्स्ट एपिसोड इंडिया द मोदी क्वेश्चन, एज वेल एज द more than 50 tweets with links to access the videos. तो उन्होंने सेंसरशिप इम्पोज करने का वो दिया. तो I&B वाले जो क्या कर रहे हैं कि उसको ब्लॉक कर रहे हैं कि जो भी साइट्स पे उसके एपिसोड्स पोस्ट करे हुए हैं, उसकी लिंक्स पोस्ट करी हुई है उसको. सो अकॉर्डिंग टू द I&B मिनिस्ट्री,
ये जो डॉक्यूमेंट्री है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, ये उनके लिए क्रिटिकल है, मतलब उनको क्रिटिसाइज करते हुए भी बनाई गई है. So, British probe into Gujarat riots was to address concerns of our constituents. This is about the 2002 Gujarat riots, which were massive. एक ट्रेन में आग लगा दी गई थी रोक कर, and it's like lot has happened. So this is very important news. You should read this. Why is this in news now? ठीक है. So British Foreign Secretary Jack Straw, in an interview with veteran journalist Karan Thapar of The Wire on the BBC documentary about the 2002 Gujarat riots, said that the British government conducted an investigation of its own because many citizens of Gujarati Muslim origin were worried about their loved ones in India and were making representations to that effect to the then Tony Blair government. तो उस टाइम पे जो टोनी ब्लेयर थे प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन में, वहाँ के सिटीजन जो है वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट, मतलब अपनी वॉइस को हाईलाइट कर रहे थे कि जो इंडिया में गुजराती मुस्लिम्स हैं उनको लेकर जो ब्रिटेन में गुजराती मुस्लिम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वो कर रहे थे कि इसमें देखा जाए, प्रोब किया जाए, बिकॉज दे आर नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद द इंडियन गवर्नमेंट एंड स्टफ लाइक दैट. तो ब्रिटिशर्स ने भी गुजरात रायट्स में प्रोब करा था, उसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन करी थी. सो you can read this. Employment days under मनरेगा at a 5-year low. ओके, मनरेगा हम सभी को पता है महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मनरेगा इसको कहा जाता है. एंड व्हाट इट डज इज ये श्योरिटी देता है कि आपको इतने टाइम के लिए, जैसे इफ़ देयर आर 364 डेज, तो उसमें से फॉर एग्जांपल 324 डेज के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी. सो इट मीन्स दैट आपको डायरेक्ट कोई पैसा नहीं मिल रहा है, आपको एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी. आपको सिलेक्ट किया, जैसे कि हम राशन देते हैं उसी तरीके से आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा जिससे आपको फिर पैसे मिलेंगे. सो मनरेगा स्कीम जो है वो यही होती है. ओके. PIB fact check unit will censor content only about censor. Okay. Mia areas is our job. Assam BJP chief Congress raises charge sheet against Modi government as is BJP of betraying everyone. Odisha cabinet nod for inclusion of 2022 castes in SEBC's social and economically backward caste list. Okay. Inspection of plane underway, Russian embassy. So much turmoil. Mitra Rus continuous erosion of federalism and consensus as GST Council. Brij Bhushan is a controversial figure with wide fan base. Okay. लाइफ इन जोशीमठ स्किट्स ऑन रेन स्नो. देखिए जोशीमठ के बारे में मैं पहले भी अपने एक एनालिसिस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वापस करती हूँ. जोशीमठ जो है वो उत्तराखंड की एक डिस्ट्रिक्ट है. वहाँ पर क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने अटल टनल जो है वो बनाने के लिए एक पहाड़ को डेटोनेटर्स की हेल्प से ब्लास्ट करा था. ठीक है, तो मतलब एक बड़ा सा पहाड़ है और उसके बीच में एक टनल बनाने के लिए उसके बीच में छेद करा था, ब्लास्ट करने पड़े थे. तो वो सब तो हो गया, लेकिन उसका अब कॉन्सिक्वेंस ये हुआ है कि उसकी वजह से जो आसपास के एरियाज़ हैं वहाँ के घरों में बड़े बड़े डेडली क्रैक्स आ रहे हैं. उनके घर अब इतने फ्रेजाइल, क्योंकि ऑलरेडी जब वो पहाड़ या टेरेन एरिया पे बना रहता है ना, तो जब ब्लास्ट होता है वो वाइब्रेशंस जो है वो ट्रैवल करते हैं, मूव करते हैं. तो उस कारण से हुआ है कि वो अटल टनल बनाने की वजह से लोगों के घरों में अब ऐसे क्रैक्स आ रहे हैं कि जैसे वो घर कभी भी टूट के बिखर सकता है. तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू लिव देन, और वो क्रैक्स अच्छे बड़े बड़े आ रहे हैं. तो अब ये जोशीमठ में हो रहा है कि अब वो 400 से भी ज़्यादा फैमिलीज़ को डिस्प्लेस करा जाए, दूसरी जगह घर दिया जाए. मतलब अब अल्टीमेटली उनको उस घर को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उस घर में रहना उनके लिए रिस्क है. वो घर ऐसे हो रहे कि कभी भी टूट सकते हैं, क्रैक्स कभी भी बढ़ के और पूरा चीरा लगा सकते हैं घर में. तो
और अब इन सब से ऊपर बढ़ चढ़ के वहाँ पे बर्फ़बारी भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, और ज़्यादा खतरा। देखिए इतनी जल्दी डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो सकता ना, बोला मतलब आज क्रैक्स आए और कल लोग घर से बाहर निकल के दूसरे घरों में पहुँच गए। इट टेक्स टाइम, इतने ज़्यादा लोगों को डिस्प्लेस करना है, दूसरी जगह घर देना है। सो अब दिस इज़ अ बिग बिग प्रॉब्लम इन जोशीमठ. Punjab Finance Minister goes to road to check tax evaders. First Indian intranasal COVID vaccine to be out on Jan 26. Of a bygone era, excavations reveal Buddhist monastery complex at Bharatpur in Bengal. Wow, that is so. Historical findings always amaze. Students complete US program on English. ED arrests Trinamool leader Kuntal Ghosh in hiding scam. Panel denies Meghalaya's estimate on extracted coal. ये भी आप सभी को पता है कि बुद्धिस्ट मोनास्ट्री मतलब वो जगह जहाँ पर जो बुद्ध के वो मॉन्क्स होते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते थे, वो रुकते थे. तो देखिए, experts say the presence of a large stupa along with monastery complex and pottery from the Chalcolithic age. Chalcolithic is the charcoal age, the charcoal age makes the site unique. The charcoal age, the copper age, okay. कॉपर एज का मतलब जिस टाइम से कॉपर का यूज़ करना शुरू हुआ था, जैसे कि पैलियोलिथिक एज मतलब स्टोन का यूज़ करना टू मेक डिफरेंट वेपन्स एंड स्टफ. तो जब स्टोन का यूज़ हुआ तो वो हुआ पैलियोलिथिक एज. देन इस तरीके से चालकोलिथिक एज इज द यूज़ ऑफ कॉपर. 3 years on, Ayushman Bharat School Health and Wellness Program has less than 50% uptake. What is this Ayushman Bharat School Health and Wellness Program? So, it has been launched under the Ayushman Bharat scheme, and only 15 states have started weekly 40-minute classroom sessions with students for mental health, wellness. उसके लिए ये जो मिशन है, ये अभी तक 40 minutes का सेशन होता है every week. एंड ये अभी तक सिर्फ और सिर्फ 15 स्टेट्स में भी लागू हो पाया है. सो ओके, इट इज़ स्लोली रीचिंग स्टेट बाय स्टेट, बट स्टिल इट हैज़ टू. ऐसी कोई चीज़ जो है ना वो डायरेक्टली मतलब बहुत जल्दी स्टेट्स में लॉन्च होनी चाहिए, विच इज़ नॉट हैपनिंग. उसको बहुत जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए. सो ओके, इट इज़ टेकिंग टाइम, इट्स वेरी लो. ओके. Man killed by Israeli in occupied West Bank, says Palestinian officials. Buzz Aldrin, second man on the moon, marries on 93rd birthday. Interesting news. This is really entertaining news. Who was the first one? Let's see who can answer. Who was the first person to step on moon? Okay, Elon Musk takes witness stand to defend his tweets on Tesla bio. And guys, if you don't know, you should know this, really. Search it on Google right now. Thousands led by far-right protest against the Spanish government. ये बहुत हो रहा है ना, पेरू में भी अभी हो रहा है, पेरू, ब्राज़ील, बहुत ज़्यादा मतलब प्रोटेस्ट हो रहे हैं अगेंस्ट द गवर्नेंस एंड ऑल दैट पीपल. ओके, चलिए आपको बता ही देते हैं. द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन मून वॉज नील आर्मस्ट्रॉन्ग. द फर्स्ट वन टू स्टेप ऑन मून, उनके सबसे पहले फुटप्रिंट वॉज ऑफ नील आर्मस्ट्रॉन्ग. काफ़ी कॉमन नेम है, आई एम श्योर लाइक आपको पता ही होगा दिस. तो क्रिस हिपकिंस टू सक्सीड आर्डर्न एज न्यूजीलैंड्स नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर. जसिंदा आर्डर्न ने क्विट करा, रिज़ाइन करा एज द न्यूजीलैंड्स प्राइम मिनिस्टर. And she was a very strong female political leader, but she had to quit due to many reasons. And अब जो next prime minister बनेंगे, Chris Hipkins, he was Jacinda Ardern के under वो education minister थे, and now he will succeed her as the prime minister. US designates Wagner Group an international criminal organization. Russia's Wagner Group. Okay. Histories of US and Africa are linked by slavery. Turkey objects to protest burning of Quran in Sweden.
Blinken calls for status quo by China on Taiwan. God, these issues, ये issues जो है ना वो ऐसे issues है, they are historical issues, लेकिन इनका अभी तक इफेक्ट प्रेजेंट में है. ठीक है, तो these are like very very कि मतलब ये सारे हिस्टोरिकल इश्यूज है. चाहे तो आप देखो मतलब स्लेवरी इशू या फिर ये चाइना एंड ताइवान का इशू, बट दीज आर स्टिल लिंगरिंग ऑन इन द प्रेजेंट इवन इन द 21st century. जर्मनी फेसेस बैकलैश ओवर इट्स रिफ्यूज़ल. आपको पता ही होगा कि बर्लिन ने, जर्मनी ने रिफ्यूज़ कर दिया है कि यूक्रेन को हेल्प करने के लिए वो टैंक्स नहीं भेजेगा. सो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट जो है वो मतलब बैकलैश देखना पड़ रहा है जर्मनी को कि दिस इज़ रॉन्ग, यू आर नॉट हेल्पिंग यूक्रेन एंड स्टफ लाइक दैट. ओके, next we have lost interview of George Lemaitre rediscovered. Now who is Georges Lemaitre? Is a broadcaster in Belgium aired an interview with a Catholic priest named Georges Lemaitre. The footage was subsequently thought lost after it went missing, but on December 31, 2022, the broadcaster in Belgium reported that it had rediscovered the video, and video could not be found earlier because it had been misclassified. Wow. It was because Lemaitre was the originator of the Big Bang Theory. That's a very very important person. Georges Lemaitre, जिन्होंने कहा था कि the earth was formed after the Big Bang Theory. उनका पहले इंटरव्यू जो है वो इट वाज सेड दैट वो लॉस्ट हो गया था, लेकिन एक्चुअली वो मिसक्लासीफाई हो गया था. मतलब उसको किसी और नाम से किसी और नाम की केस में डाल दिया था, अब वापस से सरफेस हो गया है. Genes that made whales to grow to giant size is identified. कि क्यों whales are also mammals, but उनकी साइज इतनी कैसे बढ़ गई, वो genes जिस वजह से ऐसा हुआ वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं. A powerful laser in the sky helps divert lightning skies. Why India has not witnessed any surge in cases for months? Why has it happened? Okay, without symptomatic causes. क्योंकि हमारे यहाँ कोविड तो है, ऐसा नहीं है कि कोरोना हैज़ एंडेड, बट हमारे यहाँ जो कोविड है उसके कोई सिम्टम्स ही नहीं दिख रहे हैं. इस वजह से आई थिंक वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो पा रहा है. एंड उसके अलावा इसमें है गाइस, मैं आपको रोज़ बोल रही हूँ, प्लीज़ रीड द आर्टिकल्स, डू नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीबडी एल्स कि यार दैट दे एक्सप्लेन यू और एनीथिंग. नो, मैं नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई कैन नॉट इवन डू, बिकॉज when you read this you form your own subjective opinions. You should not have opinions of any other person. Read the articles, okay? That's very important. Basically that is the essence of reading a newspaper. Reading a newspaper का मतलब सिर्फ headlines पढ़ना नहीं होता है. It means to read these articles which will form then your opinions. Extinctions may threaten Madagascar's biodiversity. Important. What led to unusually low temperature at Uti's finger post? Roman concrete, okay. Why is China's population shrinking? चाइना ने ऐसे बहुत सारी पॉलिसीज़ करी थी. इसका रीज़न था कि चाइना ने बहुत सारी पॉलिसीज़ करी थी ताकि बर्थ रेट्स को कंट्रोल में कर दिया जाए. ओनली वन चाइल्ड पॉलिसी, मतलब आप एक कपल जो है वो एक ही चाइल्ड करे, उससे ज़्यादा करने पर उस पर उस पर कुछ जैसे टैक्स लगा दिया जाएगा एंड फाइनेंशियल पेनल्टीज़ उनको देनी पड़ेगी. तो ऐसे करते करते हुआ ये कि उनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिक्लाइन हुई है. पॉपुलेशन तो अभी भी 1.3 बिलियन है. एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन गाइज, इंडिया हैज़ सरपास चाइना for the population thing. It's 1.4 billion of India and 1.3 billion in China. तो देखिए अभी तक पॉपुलेशन तो 1.3 बिलियन है, लेकिन अब उसकी ग्रोथ रेट बहुत कम हो गई है. मतलब अब जो है जो जैसे जैसे उनके जो
एल्डरली की या जो भी डेथ्स होती जाएगी उसके बाद पॉपुलेशन बहुत कम बच जाएगी, क्योंकि ग्रोथ रेट कम हो गई है। अब पर कपल देयर इज़ ओनली वन चाइल्ड, और वो वन चाइल्ड का भी अब तो वन चाइल्ड भी बहुत कम होते जा रहा है। मतलब देर आर कपल्स हु आर नॉट इवन हैविंग एनी चिल्ड्रन नाउ, और नॉट डूइंग प्रोड्यूसिंग एनी चिल्ड्रन, एनी ऑफ स्प्रिंग्स। तो इस वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। Why did China lift hold on Makki terror listing? Okay, on January 16, the United ये important है, it's about terrorist. It had placed Abdur Rahman Makki, the Pakistani-based deputy chief of the Lashkar-e-Taliban and the brother-in-law of 2611 mastermind Hafiz Saeed, on its 1267 list of designated terrorists. The move was welcomed by India. Okay, so this is about the terrorist Abdur Rahman Makki, which you can read. Okay, factual information and nothing to explain much. And ये जो बात है, हाँ, इसकी हम जब बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की, दैट ग्रोथ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। मतलब 1 पॉइंट समथिंग समथिंग या 0 पॉइंट समथिंग समथिंग रह गई है। एंड अब ये चीज़ हुआ है कि नाउ दे आर टेकिंग स्टेप्स कि ग्रोथ रेट को वापस से कंट्रोल में लाया जाए। एंड ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल उनकी पॉपुलेशन कुछ आगे आने वाले टाइम में बचे ही ना। इंडियाज़ प्लान टू इरेडिकेट मीजल्स, रुबेला, ये सारी डिजीज़ेज़ है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक डिजीज़ेज़ होती है। जैसे हमने पोलियो को ख़त्म कराया, नाउ दैट इंडिया इज़ पोलियो फ्री, वी आर ऑल्सो टेकिंग स्टेप्स टू बी मीजल फ्री एंड रुबेला फ्री विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन्स एंड biotics and all these things. So antibiotics and all these things. So now we are planning कि हम ये जो ह्यूमन वायरसेस है, मीजल्स एंड जिनसे मीजल्स एंड रुबेला होते हैं, इनसे भी हम 100% फ्री हो जाए। ओके, ये देखिए, ये है मीजल्स रुबेला वैक्सीनेशन कैंप। देखिए, द वुमन हु डिफाइड रियल पॉलिटिक, जसिंदा ऑर्डन, उनके ऊपर एक केस स्टडी हम कह सकते हैं, उनके ऊपर एक पूरा उनकी एक तरीके से पर्सनालिटी एनालिसिस, उनकी लाइफ साइकिल, एवरीथिंग हैज़ बीन डिस्कस्ड हियर. So if you're interested in knowing about a political leader like Jacinda Ardern, her personality, her aura, her decisions, her steps, everything, you can always refer to this article here. It's good, you should read this. A promise of devolution, 13th Amendment. Sri Lanka's failure to fully implement the amendment is a reminder of the Sinhalese establishment. Okay. थर्टीन्थ अमेंडमेंट के बारे में यहाँ पर बात कही जा रही है. ओके, जब हम कहें, अगर कोई भी इंडियन लीडर इस बात को पॉइंट आउट करता है श्रीलंका में कि यार आपकी जो सिन्हालीज कम्युनिटी है दैट इज़ ओवर पावरिंग एंड दैट इज़ पुशिंग द इंडियन तमिल्स और द अदर पीपल, तो वो इमीडिएटली एक अमेंडमेंट साइड करते, दैट इज़ द 13th अमेंडमेंट. ओके, लेकिन 13th अमेंडमेंट इज़ ओनली ऑन पेपर, इट इज़ नॉट बीन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड. ठीक है, 1978 में श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन ने 21 अमेंडमेंट्स को अडॉप्ट किया था. ठीक है, और उसको पास कर दिया गया था. लेकिन the 13th amendment is the only legislative guarantee of a measure of power devolution to the islands provinces. ठीक है, it provided for setting up provincial governments across the country, and there are 9 provincial councils. They are made Tamil to an official language and English a link language. तो 13th amendment जो है उसका क्या मतलब था, उसके अकॉर्डिंग कि अब श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेटअप करेगी, कि छोटे छोटे एरियाज़ की भी अपनी खुद की गवर्नमेंट होगी, एंड तमिल को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया है. लेकिन अभी तक इट इज़ ओनली ऑन पेपर, उसका एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है. जैसे कि अगर हम कहते हैं कि
फॉर एग्जाम्पल अगर हिंदी को हमें बढ़ावा देना है तो नाउ स्टेप्स हैव बीन टेकिंग, मतलब स्टेप्स हैव बीन टेकन। अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसको उसमें हिंदी को लेकर स्टेप्स लिए गए हैं उसको एम्पावर करने के लिए, लेकिन वो चीज़ जो है वो अभी तक तमिल लैंग्वेज के लिए नहीं देखी गई है, नहीं हुई है। तो 13th अमेंडमेंट इज़ ओनली ऑन पेपर एंड वो अभी तक एज यू नो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करी पाई हो पाई। तो 13 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग क्या है दैट प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स या प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेटअप होंगे, जिससे कि जैसे बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो यू नो फॉर एग्जांपल वी कैन से कि जो तमिल मेजॉरिटी एरियाज हैं तो वहाँ पे तमिल पीपल की गवर्नमेंट होगी, इंडियन तमिल्स की। तो इस तरीके से प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अभी तक सेटअप प्रॉपरली नहीं हो पाई है एंड तमिल लैंग्वेज को भी अभी तक उतना वेटेज नहीं दे पाए हैं जितना कहा गया है। इन सर्च ऑफ एन अलायंस, K. Chandrasekhar Rao, the Telangana Chief Minister, wants to counter the BJP at home and build a federal front of regional parties at the center. So this is about an analysis of the politics कि कौन क्या करना चाहता है, कैसे alliance merge करना चाहता है, all that. ICICI Bank Q3 net jumps 34%. Oh, a lot of profit here. Exports, EVS new products to drive growth, breaks India. Ultratech Cement net falls. Expenditure surges. Spain's Bergner Mulls making India cookware export hub. Yes Bank net dive 79% on provisions to appeal in SC on bonds. This is all, this is all about economy, finance and stuff like that. So people who are interested, only they can understand. जिनके नहीं पढ़ा उन्हें तो समझ में भी नहीं आएगा। स्पोर्ट्स में भी द पीपल हु आर इंटरेस्टेड, सो ये स्पोर्ट्स में ज़्यादातर समझाने का कुछ नहीं होता है। इट्स बेसिकली ऑल फैक्ट्स, मतलब स्पोर्ट्स न्यूज़ होती है, स्पोर्ट्स पर्सनस के बारे में होती है। सो yes, the one who is interested in different sports या किसी भी स्पोर्ट्स के बारे में इंटरेस्टेड है, they can always read the news, the articles that are here. Okay. This news is something. Entire families of the Araku region in AP participate in growing root vegetables and getting the harvest packed for the Friday market. Interesting. आंध्र प्रदेश में उगाया जा रहा है और फटाफट से उनको देखिए स्वीट पोटैटो और radish is sold for ₹20. These have been grown and sold.